सो इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर अगेन जहाँ पे हम जर्नल्स के बारे में बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ माय फेवरेट जर्नल जो लास्ट 3 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। इट्स नन अदर दैन द जागरूक जर्नल. If you use my code, you will get definitely discount on this, basically journal. The link is in the description, so make sure you go and buy this journal because this is just beautiful. And let's watch the unboxing video and what you will get in this box. सबसे पहले तो look at this awesome sticker. ये थोड़ा nostalgia feel देता है जहाँ पे I am जागरूक लिखा हुआ है and this is cute little sticker that kitchen we have received जो हम regularly use कर सकते हैं. Then their new product, अगर आप उनको follow करते हो तो they have launched their ginger instant chai mix, and there is this elaichi chai mix and this masala chai mix. So ये 3 sachets उन्होंने भेजे which is kind of cute and इसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भेजी है which I felt really good, and you can buy this from their website as well. I will put the link in the description. Then we have received these 2 cute stickers. So if you look at this, यहाँ पे WWF है, गेम है, नॉस्टैल्जिया है, स्पंज बॉक्स है, पॉकीमॉन है, a lot of things हैं. यहाँ पे जागरूक के कुछ स्टिकर्स है and this is for your journal. Basically यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिल ड्यू है, पेमेंट का डेट है, then basically time reminder, bad day, good idea, pin if you wanted to something pin. So these are the 2 kind of good stickers we have received, which is cute. Then you have this little thing जहाँ पे लिखा हुआ है why take a 2-minute break, and there is a reason why, because it says that usually adults spend more than 5 hours on the screen, so it's really important to take a break. And I feel really good, at least you should hang this somewhere, so at least you will remember to take a break. There are 3 stickers like this. One is this, then these are these 2. The second one is थक गए हो गए जल लीजिए, which is the meme trending on the Instagram and everywhere. So it's basically dehydration को कम करने के लिए. We can also use this. And the third one is basically don't break the streak. If you are going to do the journaling, it's really important कि do not break the streak, otherwise फिर फायदा ही क्या हो journaling करने का. तो इसलिए ये kind of दिया गया, which is really cute. Then you have this one sticker which you can use for the laptop, being जागरूक करके, quite cute. Then you have this cute letter कि जो मिला है कि you are thrilled to gift you the जागरूक journal जो हमें मिला है. This one you have a cute little magnet, and it's really good kind of magnet जहाँ पे you can write and erase as well. Basically it is used for the shopping list वगैरह, and it's a good quality magnet. उसके बाद ये basically 2 चीज़ें दी गई. Let's ignore that. But these 3 are really important. Basically ये 3 दी गए ताकि you can use them like starting from जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर. ये बेसिकली यू शुड नॉट ब्रेक द स्ट्रीक. जर्नलिंग स्ट्रीक आप कितना टाइम मेंटेन कर सकते हो. सो दिस इज रिटन हियर एंड यू कैन यूज दिस. And this is part of basically book challenge, 12-month book challenge if you wanted to do it. And there is some handwritten notes app if you wanted to check out. These are really good, like life always gives you a second chance. It's called Tomorrow. It's a quite motivational thing. Then we have this फ्रेंड स्लैम बुक जहाँ पे फ्रेंडशिप स्लैम बुक जहाँ पे नॉस्टैल्जिया फील होता है. एंड इट्स गुड. यहाँ पे यू कैन राइट नेम, ड्रीम सिटी, ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, ब्ला ब्ला ब्ला, अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन राइट, एंड यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स टू फिल दिस अप. ये इस बार एडिशन हुआ है, ये चाय, ये सब कुछ एडिशन हुआ है इस बार, विच इज़ रियली गुड. देन वी हैव द प्लानर विच इज़ ऑसम, जहाँ पे यू कैन सी डे एंड डेट, यू कैन पुट टू डू लिस्ट, यू कैन पुट कॉल्स, मीटिंग्स अगर कोई तो हो, सेल्फ केयर के लिए आप क्या करते हो, देन ब्रेन डम क्या कुछ भी आइडियाज़ वगैरह हो, तो दैट यू कैन राइट हियर. एंड इट्स रियली गुड. फर्स्ट टाइम उन्होंने प्लानर भेजा है, लास्ट टाइम केस में नहीं था. एंड दिस क्वालिटी इज़ ऑल्सो गुड, एंड आई एम डेफिनेटली गोना यूज दिस प्लानर फॉर श्योर. देन वी हैव दिस प्लेइंग गेम कार्ड, वो स्लेक एंड लाइडर वाला गेम जिसके बारे में हम बात करेंगे बाद में. We have this one pen which is known as I am Jagruk pen, and it's also looks good, black sleek pen. Then we have 2 journals. First one is volume 1 and this one is second one is volume 2. इस बार उन्होंने थीम बेसिकली गेम की थीम यूज़ की है. You have to win this game kind of, so you have to win the new year. So this is a kind of theme, and even everything, the font and everything, that is more about the theme as well. So here you can journal belongs to the name. Here basically monthly view, here you can see, and if you look at the font and everything, it's more like a nostalgia. 90s के कंप्यूटर कैसे रहते थे तो वैसे वाली ये थीम उन्होंने इस बार यूज़ की है. यहाँ पे हैबिट ट्रैकर आपको मिलता है,
Then यहाँ पे goals, personal goal, finance goals and your professional goals that you can write. And here starts the actual day. 1st January I will remember this day for आपका मूड कैसा था आप लिख सकते हो. Then I will use this tracker for to-do list and recap of the day. Every day they ask you one questions, like here the second question, and you have to write that answer in this question. One basically June तक use होता है. It's a good quality material as well and lightweight as well, तो आप कहाँ पे भी carry कर सकते हो. Second one we have, this is a volume 2 and it's really good. यहाँ पे मारियो की थीम उन्होंने यूज़ की गई है and even the inner part is all about the same, जहाँ पे हम nostalgia feel करते हैं. This will start from the July till the end of the December, and here you know we are rooted for, and at the end of the day at the end of the page they have written some goals. Basically productivity के क्या क्या goals होने चाहिए, rule of 3 क्या होता है, 1 2 3 rule क्या होता है, 2-minute rule क्या होता है. So they have given some information, you know, important information that you can use. And in the first journal they have basically given the information about the finance, कि finance के rules क्या क्या होते हैं. अगर house आपको buy करना है, car buy करनी है तो उसके rules क्या क्या होते हैं. So this is a kind of 2 journals and इसके नीचे आपने खेलने के लिए ये basically Ludo as well as इसके पीछे snake and ladder है. So these are kind of 2 journals. This is the journal I have decided. So this is all about this journal and I know this is a kind of a long video but it's basically मुझे सारी चीज़ें इसमें से explain करनी थी and I hope I have covered almost everything about this journal. If you like this journal, make sure you comment down what you liked about this journal and I will try to put more videos on the journaling, like what type of journaling I use, मेरा online journaling कैसे होता है, offline कैसे होता है, then different types of journaling methods that I use, productivity के लिए कैसे journaling use करते हैं, bullet journaling क्या होता है. ऐसे बहुत सारे videos that I have wanted to make. So basically ये basic video था where I talk about this my favorite journal. This is a Jagruk journal and I hope you have liked this video. Make sure you use the code RONAKJJ to get discount on this journal when you buy it. So that's all for today's video. See you in the next one. Bye bye.